जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में तीसरे चैप्टर में थोड़ा सा पढ़े थे, याद करिए। The maximum absorption takes place in the PCT as because of the presence of which type of epithelium? Brass bordered cuboidal epithelium present in the PCT, and that is why it is the maximum absorption. हम लोग इसी टॉपिक में इसी चैप्टर में उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. So PCT में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा? ना ब्रश बोर्डेड क्यूबोइडल. PCT with also cuboidal. Loop of Henle with cubical cells, cuboidal cells, and simple squamous. याद करिए हम लोग पढ़े थे कि पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले कंटेन्स स्क्वामस एपिथेलियम. ये एनसीईआरटी का लिखा हुआ चीज है, ध्यान रखना इस चीज को. So now the next is the types of nephron. Just मैंने आपको previous classes में nephron का description दिया था. Today we will start the types of nephron. There are two different types of nephrons are there. One is cortical nephron. Second is juxtamedullary nephron. Cortical nephron and juxtamedullary nephron. So character number one. Malpighian corpuscles Malpighian corpuscle is the combination of what? The glomerulus and Bowman's capsule. Correct. So Malpighian corpuscles present on outer cortex. Juxtamedullary nephron में that Malpighian corpuscle is present on the inner cortex. देखिए कॉर्टेक्स का भी दो पार्ट है. जैसे आउटर कॉर्टेक्स मतलब आउटवर्ड होगा एंड इनर कॉर्टेक्स क्या होगा ना, टुवर्ड्स मेड्यूला, है कि नहीं? कॉर्टेक्स का भी तो दो पार्ट होगा ना. सपोज भी मान लेते हैं ये आपका किडनी है, सपोज टू बी दिस इज लाइक दिस. तो ये जो पार्ट है ये क्या है? ये कॉर्टेक्स है कि नहीं? एंड ये जो सेंड पार्ट मैंने किया ये तो मेडुला है. तो कॉर्टेक्स का भी दो पार्ट है. कॉर्टेक्स का भी दो पार्ट है. अभी सपोज टू बी कॉर्टेक्स को दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया तो आउटर पार्ट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? आउटर कॉर्टेक्स. एंड द इनर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज व्हाट? ना इनर कॉर्टेक्स. सो रिमेंबर Malpighian corpuscles of the nephron definitely will be present in the cortex. Cortex में ही होगा. If it is present outward, called as juxtamedullary. If it is present inward, then it is called as cortical, and then it is inward, then it is called as juxtamedullary. तो दोनों ही कॉर्टेक्स में देखिए, एक है आउटर कॉर्टेक्स, दोनों है, दूसरा है इनर कॉर्टेक्स. पॉइंट नंबर 2.
कॉर्टिकल नेफ्रॉन आपके बॉडी में 85%. So 85% nephron present in this cortical type, and it is 15%. Number 3, loop of Henle is shorter. Loop of Henle short होगा यहाँ पे, and here in case of juxtamedullary nephron, loop of Henle is longer. Number 4, Vasa recta is absent. Mostly absent होते हैं, but you can also say reduced भी हो सकते हैं. But most preferably we will say the vasa recta is absent. क्योंकि देखिए सिंपल कंसेप्ट है भाई, अगर मान लेते ये लूप ऑफ हेनले है, तो वासा रेक्टा, दिस वन विल बी वासा रेक्टा, रहेगा कि नहीं? तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज क्लोज टू डिसेंडिंग वासा रेक्टा, एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज क्लोज टू असेंडिंग वासा रेक्टा. लूप ऑफ हेनले अगर शॉर्ट है या रिड्यूस्ड है, जैसे कि यहाँ पे है, तो वासा रेक्टा क्या होगा? एब्सेंट होगा कि नहीं? अगर लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है, देन वासा रेक्टा विल बी वेल डेवलप्ड. नहीं समझे? तो वासा रेक्टा तो डायरेक्टली एसोसिएटेड क्लोज टू द लूप ऑफ हेनले है, एंड दैट इज एंटी पैरेलल काउंटर करंट. याद आया? सो लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है तो वासा रेक्टा रिड्यूस्ड होगा या तो एब्सेंट होगा. अगर लूप ऑफ हेनले लंबा सा है तो वासा रेक्टा क्या होगा ना? वेल डेवलप्ड होगा. एंड सेकेंड, जहां पे काउंटर करंट एग्जिबिट करता है वहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन इफेक्टिव होता है. एंड काउंटर करंट एग्जिबिट व्हाट? ना हेल्प्स इन द मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन. तो which nephron will participate in the more water absorption? Juxtamedullary. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो juxtamedullary nephron is concerned with the more water absorption because that is concerned with the counter current mechanism. समझ में आ रहा है? अभी सब चीज को रिलेट करना है तो इजी हो जाएगा. हम लोग जब कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं, हम अपना वाटर को कंजर्व करते हैं, वाटर को कंजर्व करते हैं, राइट? तो यूरिन विल बी फॉर्म व्हिच इज कंसेंट्रेटेड. नॉर्मल कंडीशन में वाटर को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, सो दैट विल प्रोड्यूस व्हाट ना? डाइल्यूटेड यूरिन. डाइल्यूटेड यूरिन मींस मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर. कंसेंट्रेटेड यूरिन मींस less content of water. And which of the following nephron is concerned with the more water absorption? Juxtamedullary. So which nephron is that is functional during the stress? Juxtamedullary. And normal condition में कौन होगा? Cortical nephron. अब sympathetic and parasympathetic आप लोग पढ़े हो कि sympathetic operate during the stress condition and parasympathetic operate during the normal condition. तो parasympathetic किसको कंट्रोल करेगा? नार्कोटिकल. एंड सिंपैथेटिक किसको कंट्रोल करेगा? समझ में आ गया? तो स्ट्रेस कंडीशन में आपका हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस होता है, दैट इज कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा बिकॉज़ द वाटर एब्जॉर्प्शन इज ऑकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली. एंड नॉर्मल कंडीशन में डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है और हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस होता है. ठीक है? तो नंबर 4, vasa recta well developed. Point number 5,
under the control of parasympathetic, under the control of sympathetic nervous system. Number 6, reduce, dilute or hypotonic urine. Will produce concentrated or hypertonic urine. तो parasympathetic मतलब normal condition and sympathetic means stress condition. तो इसीलिए जब भी हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, तो यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाता है कि नहीं? यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाएगा तो मिक्चुरेशन भी कम हो जाता है. सपोज टू बी बहुत ही सिचुएशन ऑड सिचुएशन में हम लोग है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, दूसरे चीज में हम लोग का ब्रेन इन्वॉल्व है, भूख भी कम हो जाता है, पढ़े हम लोग, यूरिन फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा. दिस इज द कॉज बिहाइंड दिस. ठीक है? So this is all about the types of nephron, cortical and juxtamedullary nephron. Next we are moving to JGA. So before that थोड़ा सा बाकी है आप लोग का. किडनी तो कंप्लीट हो गया, अभी बचा है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. तो लेट्स डिस्कस द यूरेटर फर्स्ट. Ureter, extended in between hilum of kidney to urinary bladder. तो जहां से यूरेटर का ओरिजिन हुआ है उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं ना, हिलम और हिलस. तो वहां से एक्सटेंड होगा एंड यूरिनरी ब्लैडर में एंड होगा एंड इट ओपन्स into urinary bladder. It opens into urinary bladder obliquely inward and upward. मैं इसका मतलब क्या है, obliquely inward and upward का मतलब क्या, मैं डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट इज इट इज 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. हिस्टोलॉजी अगर देखा जाए यूरेटर का, it is formed of 3 layers. First is external advancia. Second is middle muscular. And third is inner mucosa.
External adventitia, it is made up of soft connective tissue. Middle muscular, it is made up of smooth muscles. And inner mucosa, it is actually mucosa तो लिखा है लेकिन ये mucosa नहीं है, मतलब ये mucus layer mostly inner होता है and inner को यहाँ पे mucosa बोल दिया, but it is not made up of mucus actually, although it is made up of a type of connective tissue, that is mostly it is formed of loose connective tissue. This is the histological part of the ureter. अभी नेक्स्ट में हम लोग आते हैं यूरिनरी ब्लैडर. ये थोड़ा मॉडिफाइड है, इसमें फाइबर्स का क्वांटिटी ज्यादा होगा, येलो फाइबर का क्वांटिटी. urinary bladder, urinary bladder, it is meant for the storage of urine for temporary time. It is meant for the storage of the urine for the temporary period of time. And इसके तीन अलग अलग पार्ट. First is apex, second is body or fundus, and third is neck. So let's see the diagram of that. हम लोग पढ़े थे, इसको ट्रायगन बोलते हैं, याद है ना? अब मैंने जो अभी लिखा था कि यूरेटर्स आर ऑब्लिकली इनवर्ड एंड अपवर्ड, देखिए तो यूरेटर जो ओपन हुआ है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, ये डायरेक्टली लॉन्गिट्यूडनली ओपन नहीं हुआ है, ऑब्लिक ओपन हुआ है, ऑब्लिक, ऑब्लिकली इनवर्ड एंड देन अपवर्ड, है ना? उससे क्या होगा ना, जो यूरिन जो है वो बैकफ्लो नहीं करेगा. ऐसे भी हो सकता है कि भाई जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, बहुत ही जेन्युइन चीज है, जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मिक्चुरेशन ऑकर्स थ्रू द यूरेथ्रा. Must be chance that urine which is present in the urinary bladder can be reversed back through the ureter. हो सकता है. Why it is passes only through the urethra? It can be passes through the ureter back into again to the kidney. तो ये obliquely inward and upward है ना, इसलिए ये प्रेशर काम नहीं करेगा, मतलब वो बैकफ्लो नहीं करेगा. ठीक है. Now this part is called as apex. This is called as body or fundus. And this part is called as neck. यहाँ पे important ये है कि नेक में स्पिंटर होता है.
नेक विथ स्पिंक्टर एंड रिमेंबर मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, ध्यान से। स्पिंक्टर हाफ से डिफरेंट है, सेपरेट है। ये भाल्व है। हाउ मेनी cusps are there? ना 3 cusps, तो ट्राइकॉस्पिड। ये भाल्व है, व्हाट ना बाइकॉस्पिड। ये भाल्व है, प्री सेमिलुनार भाल्व, याद आया। स्पिंक्टर अलग है। स्पिंक्टर क्या है ना, ऐसे हो, ऐसा रहेगा स्पिंक्टर। एंड स्पिंक्टर का क्या होगा ना, both valve and sphincter are regulating or guarding the opening and closing of any kind of opening, but valve क्या होता है ना, up and down ऐसे नीचे होता है, opening and closing। लेकिन sphincter क्या है ना, as a whole they will close and open like this। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो contraction of this sphincter leads to closing and the relaxation of the sphincter leads to what na, opening। Relaxation of the sphincter leads to opening and contraction leads to what ना, closing। तो maturation के टाइप में ये यूरेथ्रा का जो नेक, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर का जो नेक पार्ट है, that should be open, yes or no? Then only the urine can be maturate with the through the urinary or the urethra। तो sphincter should be relaxed during the maturation or during that is during the maturation it should be contract। relaxation होना चाहिए, तभी जाके ये मैच्योरेट होगा। समझ में आया कि नहीं? So with two sphincter, one is internal, another is external। इंटरनल जो है वो इनवॉलेंट्री है एंड एक्सटर्नल जो है वो वॉलेंट्री है। Means internal is made up of what? Smooth muscles and external is made up of what na? Skeletal। पॉइंट यहाँ पे है, ड्यूरिंग maturation or urination both sphincter relaxes under the influence of cerebral cortex। आप लोग पढ़े हो कि ब्रेन का दो मेजर पार्ट है, एक है सेरेब्रम, दूसरा है सेरिबेलम, पढ़े हो। एंड सेरेब्रल हेमिस्फीयर टुगेदर टू फॉर्म वन सेरेब्रम। तो एक सेरेब्रम में कितने सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना, दो। एंड अगर हम लोग सेरेब्रम को देखें तो सेरेब्रम में आउटर सेरेब्रम इज कॉल्ड एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड इनर सेरेब्रम इज कॉल्ड एज सेरेब्रल मेड्यूला। एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स मोस्टली वॉलंटरी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। Cerebral cortex control what na, voluntary activities, because of the most of the voluntary centers are located in the cerebral cortex, whereas cerebellum it is actually control the involuntary processes। so cerebrum voluntary, cerebellum involuntary, and this maturation is to be controlled by cerebral cortex की cerebral medulla की cerebellum। क्या लिखा मैंने? cerebral cortex means maturation is a voluntary process की involuntary process। that is why maturation is a voluntary process as it is under the directly control of what? the cerebral cortex। cerebrum control करता है इसको
बाय रिलैक्सिंग बोथ द स्फिंक्टर मसल्स। आप बोल सकते हैं कि एक तो इनवॉलंटरी है, दूसरा वॉलंटरी है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स विल सेंड द सिग्नल and that signal will relaxes both the muscles, leads to what na micturition। इसीलिए micturation क्या है ना, it is a type of voluntary process। कंप्लीट है। लिखा तो है इनमें इंटरनल एक्सटर्नल। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में तीन अलग अलग लेयर आ जाएगा, 3 लेयर। फर्स्ट इज एक्सटर्नल एडवांस ये, is found of smooth muscle, sorry, soft connective tissue। Second is, that is middle muscularis, and remember here the muscles present in the urinary bladder meant for what, a detrusor। डेट्रूसन का मतलब क्या है ना, फोर्स, उसको प्रेशर देना। ठीक है, क्योंकि अगर यूरिनरी ब्लैडर अगर प्रेशराइज नहीं होगा तो फिर यूरिन फोर्सफुली बाहर कैसे निकलेगा। तो विच मसल क्रिएटिंग द प्रेशर इन द यूरिनरी ब्लैडर लीड्स टू destruction of urine, na smooth muscles present in the middle layer। That is why the smooth muscles present in the middle layer of urinary bladder is called as detrusor muscle। And this is the smooth। And the last, that is inner mucosa। इनर म्यूकोसा का भी यहाँ पे 2 लेयर है। वन इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, अनदर इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम हम लोग पढ़े थे, इलास्टिक, याद है। स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल बोथ टुगेदर टू फॉर्म द कंपाउंड एपिथेलियम। एंड स्ट्रेटिफाइड क्या था, नॉन स्ट्रेचेबल था, बट ट्रांजिशनल क्या था ना, स्ट्रेचेबल था। एंड इसी वजह से यूरिनरी ब्लैडर ज्यादा स्ट्रेचेबल हो जाता है, एंड इसके वजह से वो ज्यादा बढ़िया से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो दैट यूरिन विल बी पास्ड आउट। ठीक है, सो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होगा वो आउटर होगा, एंड सबसे इनर कौन है ना, ट्रांजिशनल। So this is all about the urinary bladder। अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, first of all, it is only found in mammals। It is only found in mammals। mammals को छोड़ के और किसी में नहीं होता है। नेक्स्ट इज यूरेथ्रा। मेल के केस में अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग इन केस ऑफ मेल। तो हम लोग यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इन मेल इट इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कैरी
क्या कैरी करेगा? बोथ यूरिन एंड स्पर्म और सीमेन. And that is the reason why in case of male, the urethra is called as what? Na urinogenital tract or anogenital duct. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इन केस ऑफ मेल फ्रॉग डैश एक्ट एज ए यूरिनोजेनिटल डक्ट एंड इन केस ऑफ मेल ह्यूमन डैश एक्ट एज ए यूरिनोजेनिटल डक्ट. क्लियर है? व्हाई इन केस ऑफ फ्रॉग देयर इज नो यूरेथ्रा? क्योंकि मैमल का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ही है, इसीलिए फ्रॉग में यूरेथ्रा होता ही नहीं है. तो ओनली द यूरेटर कैन बी द ऑप्शंस. ठीक है? And in female, it is 2 to 4 centimeter long and carry only urine. सिर्फ यूरिन पास कर. ठीक है? Next we are coming to juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus, that is JGA. Supposed to be this is the Bowman's capsule. This is the afferent arteriole, this is the efferent arteriole. Afferent wider होता है, diameter उसका lumen ज्यादा होता है afferent का, efferent का narrow होगा. ये बहुत ही important factor है. And previous class में मैंने जो diagram आपको बताया था, उसमें क्या होता है कि जो DCT part है, DCT is very close to the glomerulus and Bowman's capsule. DCT का जो area है, वो DCT very close to what? The glomerulus and Bowman's capsule, togetherly called as what? The Malpighian corpuscle. इसका मतलब ये है कि DCT is close to Malpighian corpuscles. Now, the cells present around the afferent arteriole, these are actually muscle cells. जो मैंने green color में किया actually ये muscle cells, which is present around the afferent and efferent both. लेकिन afferent arterioles में जो muscle cells present है, that actually modified, and this modified muscle cells is called as what na? JG cell or juxtaglomerular cells. तो juxtaglomerular cell क्या है? Normal muscle cell है कि modified muscle cells? Modified smooth muscle cells. So this is actually modified smooth muscle cell present in the afferent arteriole is called as JG cell. और एक cell present है here in the efferent arteriole, this is called as normal muscle cells. ये normal smooth muscles. Modified है कि unmodified है? Unmodified. तो unmodified होगा तो JG cell नहीं होगा. ये number one. Number two, as just I told you, कि DCT also very close to what ना? Malpighian corpuscles. तो DCT में अभी हम लोग पढ़े थे हिस्टोलॉजी में कि DCT में क्या प्रेजेंट होता है ना? क्यूबर्टल एपिथेलियल सेल्स पढ़े थे ना? Cuboidal epithelial cell close to the Bowman's capsule and glomerulus.
are more elongated, more dense. And that dense cuboidal cells present towards the Malpighian and corpuscles are called as macula densa. So macula densa is actually dense cuboidal cell in DCT. So dense cuboidal cell present in the DCT is called as what na macula densa. समझ में आया कि नहीं? And this togetherly called as JGA, that is juxtaglomerular apparatus. So juxtaglomerular apparatus में दो cells आएंगे. One is JG cell, another is macula densa. JG cell, modified smooth muscle cell, present around afferent arteriole. Whereas macula densa, dense cuboidal cells in DCT is close to the Bowman-Scapulin glomerulus. And याद रखना होगा कि जेजी सेल यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कि जेजी सेल सिक्रेट एरिथ्रोपोइटिन and also secrete renin. ये दो हार्मोन है. एरिथ्रोपोइटिन का फंक्शन क्या है ना, that will stimulate erythropoiesis. That will stimulate the erythropoiesis, the formation of the RBC, a part of the formation of blood. ठीक है, लेकिन रेनिन हम लोग आर ई डबल एन पढ़े थे डाइजेशन में, एंड ये है आर ई सिंगल एन. तो आर ई डबल एन हो जाएगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम, मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. और आर ई सिंगल एन हो जाएगा, दिस इज ए हार्मोन व्हिच इज ए पार्ट ऑफ RAS mechanism. Part of RAS mechanism. एंड हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं RAS mechanism इसी चैप्टर में. So don't worry about that. I will discuss everything. तो आपको juxtaglomerular apparatus थोड़ा बहुत आइडिया हो गया. ये juxtaglomerular apparatus किस किस सेल से बनता है, ठीक है. फिर तो वहीं पर डायग्राम में देखो समझ लो. डीसी बहुत लंबा पार्ट है, पूरा कॉइल्ड होके रहता है. पूरा का पूरा पार्ट नहीं रहेगा, कुछ पार्ट तो रहेगा ना. Part which is close to the glomerulus with macula densa. Now we are coming to the very important part of this chapter, that is urine formation. So urine formation mechanism will start now. Urine formation takes place in three steps. हम one by one steps discussion करने वाले हैं. So we'll come to the first step. Glomerular filtration or ultrafiltration. What is the meaning of glomerular filtration and what is the meaning of ultrafiltration? Glomerular filtration का मतलब है the filtration takes place in glomerulus. The filtration takes place in glomerulus is called as glomerular filtration. And
The filtration takes place under pressure. As the filtration takes place under pressure, so called as ultrafiltration. As the filtration takes place in the glomerulus, so called as glomerular filtration. ठीक है, अभी थोड़ा सा कार्डियक आउटपुट के बारे में याद करिए. हम लोग सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़े थे कि 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुट इज सप्लाइड टू द किडनी. याद आया? मैंने आपको डिस्कशन किया था कि ऑलमोस्ट 5 लीटर ऑफ द ब्लड इज पासिंग फ्रॉम द ईच किडनी पर मिनट. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ना कार्डियक आउटपुट. देन कार्डियक आउटपुट का कितना परसेंटेज ब्लड किडनी को सप्लाई होता है ना? 1/5 पार्ट मींस 20%. एंड 5 लीटर का 20% ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा ना? 1 लीटर. लेकिन ये वैरी करता है तो बोल के हम लोग इसको 1100 to 1200 बोलेंगे. तो व्हाट इज द ब्लड सप्लाई टू द both the kidney per minute? ना 1100 to 1200. So on average 1/5 of cardiac output that is 20%, that is 1100 to 1200 ml blood supplied to kidney for filtration. तो फिर 1100 to 1200 को हम क्या बोलेंगे? आरबीएफ बोलेंगे. आरबीएफ मतलब रेनल ब्लड फ्लो. तो रेनल ब्लड फ्लो कितना है? 1100 to 1200 is called as renal blood flow. That is 1/5 of the cardiac output, 20%. ठीक है. Now the next point is filtration layer और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. किस किस के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है? फिल्ट्रेशन किस किस के बीच में हो रहा है भाई? हम लोग 1000 बार ये डायग्राम नहीं कर सकते हैं. 50 बार ये डायग्राम को हमको करने के लिए टाइम नहीं है. फटाफट बोलिए. क्लास में बैठना है तो बी अटेंटिव. फिल्ट्रेशन किस किस के बीच में हो रहा है? 50 बार बोलने की आदत नहीं है मुझे आप लोग आदत मेरा खराब कर रहे हो. 21 बार पूछेंगे, फटाक से आंसर देना है. Glomerulus and Bowman's capsule. Glomerulus is made up of what? Na capillary. Bowman's capsule is made up of what? That is also squamous epithelium. पढ़े थे podocyte, modified squamous. तो glomerulus में endothelium होगा. Endothelium is made up of squamous and Bowman's capsule also made up of squamous. तो दोनों का squamous हुआ कि नहीं? And दोनों का basement membrane भी होगा. So what are the 3 layers through which the filtration is taking place? The endothelium of glomerular capillary, number 2, squamous epithelium of Bowman's capsule, and basement membrane of both.
ये एक्चुअली फिल्ट्रेशन का लेयर है जिसके थ्रू फिल्टर होता है। अभी क्योंकि मैंने जस्ट लिखा था कि फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेशर, तो वो प्रेशर क्या है, कैसे प्रेशर एग्जिबिट करता है। प्रेशर इन glomerulus ड्यू टू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिल्ट्रेशन जो प्रेशर में फिल्ट्रेट होता है तो ये प्रेशर कैसे आता है ना, उसका दो कारण है। एक कारण मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, lumen of the afferent arteriole is wider than what na efferent, so wider diameter or large diameter in case of what na afferent, so afferent arteriole have larger diameter, than efferent. Second, several different type of pressure. ये क्या प्रेशर है अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि several different type of pressure are there which leads to the filtration under pressure. Number one, first is glomerular hydrostatic pressure. Glomerular hydrostatic pressure, GHP. The pressure in which the blood, the pressure in which the blood enters into glomerulus. एफरेंट एट्रियोल के थ्रू ब्लड एंट्री करता है कि नहीं, तो जिस प्रेशर में ये ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर एंट्री किया, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड दिस इज 60 mmHg एंड ये वेरी करता है फ्रॉम 60 to 75 mmH. व्हाट इज GHP? 60 mmHg. ठीक है, फिनिश्ड. चलो नेक्स्ट पेज में. तो ये था ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. नेक्स्ट इज ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. Blood colloidal osmotic pressure, that is BCOP. It is actually the pressure exhibited by blood proteins. Mostly I am telling what na globulin. तो ब्लड में जो ब्लड प्रोटीन है वो तो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट है ना, वो जो प्रेशर एग्जिबिट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 30 mmHg. Next is
capsular hydrostatic pressure. Capsular hydrostatic pressure. Capsular hydrostatic pressure, that is CHP. और ये क्या है वो भी मैं बता देता हूं. This is Bowman's capsule. This is glomerulus. In between the Bowman's capsule and glomerulus, ये जो स्पेस है, ये स्पेस में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा कि नहीं? That fluid is called as what? ना interstitial fluid. And the fluid which is present always inside the Bowman's capsule. Bowman's capsule के अंदर तो हमेशा fluid present रहेगा. Because this filtration which is takes place 24/7 ये filtration चलता है कि नहीं? अगर ये 24/7 filtration चलता है तो capsular space, the space inside the Bowman's capsule is called as capsular space. तो capsular space में हमेशा कुछ ना कुछ fluid present रहेगा कि नहीं? And that fluid we know is called as what? Na glomerular filtrate. ये दोनों का कंबाइंड प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. Pressure exhibited by interstitial fluid and glomerular filtrate. And ये combined pressure कितना होगा? 20 mmHg. अब एंट्री किया था कितने प्रेशर में? 60. पानी सपोज टू बी ऐसे नॉर्मली फ्लो हो रहा है और वहां पे आपने बहुत सारा पत्थर रख दिया, बहुत सारा ऑब्स्टैकल रख दिया, तो पानी का जो प्रेशर है, फ्लो है, वो स्लो हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? तो एंट्री किया था 60 में, लेकिन पहले तो ब्लड प्रोटीन उसको अपोज किया. 60 - 30 कितना बचा? 30. फिर ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड जो कैप्सुलर फ्लूइड है वो भी अपोज करेगा कि नहीं? 30 - 20 कितना हुआ? 10. तो व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रेशर in which the filtration is occurring? Not 10. बात को समझे? 60 प्रेशर में अगर फिल्ट्रेट होगा तो यूरिन फॉर्मेशन 10 टाइम्स हम लोग का इंक्रीज कर जाएगा. तो ये मिनिमाइज होता है because of this controlling of the pressure, and that actual pressure is called as net filtration pressure or effective filtration pressure or glomerular filtration pressure. NFP or EFP or GFP. The actual pressure at which filtration
occurs. So GFP is equal to GHP minus COP plus CHP, that is 10 mmH. क्योंकि मैंने आपको GHP वहां पे 60 to 75 वैरी दिखाया था ना, तो यहाँ पे ये जो 10 mmHg है वो भी वैरी करेगा, 10 to 25 mmHg ये वैरी करेगा। समझ में आया कि नहीं?